हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूनिट 5 ब्लॉक 3 एंड MEG-7। इसमें मूर्ति द सेंट्रल फिगर के बारे में बात करेंगे आज हम। लेट अस स्टार्ट। मूर्ति द सेंट्रल फिगर ऑफ राजा राव's कांतापुरा इज इंट्रोड्यूस टू द रीडर ऑन अ सिग्निफिकेंट नोट। मतलब बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस करेक्टर की, सेंट्रल फिगर है ये। अर्ली इन द नॉवल द नरेटर इज कमेंटिंग ऑन DORE door, the university graduate, and contrast him with मूर्ति। तो वो इसमें बताया गया है शुरुआत में ही, नरेटर जो अचक्का है वो कैसे एक लड़का है DORE डोर करके, उसकी वो इन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, तो उसको कैसे कंट्रास्ट किया जाता है मूर्ति के साथ। ऐसा बोला गया, ही वॉज नॉट लाइक कॉर्नर हाउस मूर्ति हु हैड। अब देखो ही मीन्स डोर की बात हो रही है कि वो कॉर्नर हाउस मूर्ति की तरह नहीं है। अब मूर्ति के बारे में बताया जा रहा है, हु हैड गॉन थ्रू लाइफ लाइक अ नोबल काउ, क्वाइट, जेनरस, डेफरेंट एंड ब्राह्मणिक, अ वेरी प्रिंस। आई टेल यू, वो ऐसा बोलती है। वी लव्ड हिम ऑफ कोर्स एज यू विल सी, एंड इफ only I had not been a daughterless widow, I should have offered him a granddaughter if I had one. अगर मेरी granddaughter होती तो मैं उसकी शादी उससे करवा देती, वो इतना अच्छा लड़का है। Now, this simple statement of Achakka holds the key to the figure of Moorthy in the novel. The Hindus venerate the cow and give it the status of a mother for its milk that nurtures us. For someone to be called a noble cow is giving him high honor. It gives us the first clue to the personality of Moorthy. He is kind and non-violent and cares for others. In contrast to the vicious waterfall Venkamma, he is quiet, and in contrast to the greedy Bhatta, he is generous. And then he is calm, respectful, Brahmanic, a very prince among the ordinary people of Kantapura. मतलब सब लोग उसकी तारीफ ही करते हैं। They think he has all the good qualities and they have no hesitation in accepting him as their leader in the Satyagraha movement that he launches in the village. Moorthy is a sacrificing young man who had no personal ambitions. He cares for the others, ये qualities बताई हैं। He cares for the others, the poor villagers, the pariahs, and the coolies of Scaffington Coffee Estate. Moorthy has a good organizing capability. When Rachanna's family is sent away from the coffee estate for raising his voice against the oppression and challenging the authority of red men, Moorthy immediately arranges alternative shelter for him. एक एग्जाम्पल दिया है कि वो कितना अच्छा है। बट वेन ही लेटर ऑन गोज टू विजिट द फैमिली इन द हर्ट, ही फाइंड्स इट हार्ड टू अवॉइड द हॉस्पिटैलिटी ऑफ रचन्ना's wife. His Brahminic consciousness and upbringing raises a doubt in his mind whether he is doing the right thing or not. He hesitates to cross the threshold and tries to avoid taking the glass of milk offered to him. When his mother doesn't let him enter her kitchen for fear of polluting it, he accepts her verdict without protest. In his analysis of the role of Moorthy, the central character of Kantapura, Paranjabe writes, ये लिखते हैं, Kantapura is really a novel about a village rather than about a single individual. Nevertheless, Moorthy, the Brahmin protagonist of the villagers' struggle against the government, is a prototypal hero. वो हीरो है उसका। Moorthy is the leader of a political uprising, but for him, as for Gandhi, whom he follows, politics provides a way of life indistinguishable from a spiritual quest. Action is the way to the absolute. In Gandhi, he finds what is right action. Thus, for him, becoming a Gandhi man is a deep spiritual experience. Now, the people of his community refer to Moorthy as a Gandhi man.
देर इज़ अ ड्यूबियस, दिस इज़ अ ड्यूबियस टर्म. कैसे है ड्यूबियस? Because since it is used by both the followers as well as the detractor of the गांधी जी को मानने वाले और ना मानने वाले सब लोग मूर्ति को गांधी मैन ही बोलते हैं. गांधी मैन कुछ लोगों के लिए वर्ड अच्छा है, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं है. फॉर द followers of Gandhi, it is a meritorious and noble term, but in the eyes of his detractors, it is a derogatory term. It all depends on who is using it and in what context. Very early, Moorthy comes under the influence of the charismatic influence of Mahatma Gandhi when he listens to him at a public meeting in the city. From that day onward, he modeled his life on that of the Mahatma. He tries to imitate Gandhi in every respect. Whatever action Gandhi initiates in his struggle against the British rulers, Moorthy duplicates it at the village level. He reads the Gita, plies the spinning wheel, uses the spinning wheel, and even mimics Gandhi's Dandi march by letting the picketing of the toddy shop. और गांधी के जो गांधी जी के डांडी मार्च है ना, उसको भी उन्होंने मूर्ति ने जो है वो कॉपी किया है. कैसे किया है? टॉडी शॉप में, टॉडी जहाँ लिकर मिलता था, शराब मिलती थी, वहाँ पे कुछ लोग खड़े कर दिए ताकि वहाँ शराब ना बिके. When his followers suffer from police atrocities, पुलिस के अत्याचार से सफ़र करते हैं लोग, he is once again beset by self-doubt. He and goes on a fast on to death. परेशान हो जाता है वो, उसको सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है, तो वो जो है फास्ट रखता है, विच ही इज़ लेटर परसुएडेड टू गिव अप. बाद में उसको छोड़ना पड़ता है इस फास्ट को. दिस एक्शन ऑफ मूर्ति मेक्स हिम आउट टू बी अ पैरोडी ऑफ गांधी. अब गांधी जी तो अगर फास्ट रखेंगे तो वो अच्छे से रखेंगे, लेकिन ये छोड़ देता है, मूर्ति छोड़ देता है, तो एक मजाक बन जाता है, सेटायर सा हो जाता है कि देखो इसने फास्ट रखा था और ये अच्छे से कर नहीं पाया. Rangamma, a respectable and wise woman of Kanthapura, speaks of Moorthy the good, Moorthy the religious, and Moorthy the noble. At the time of the convening means इकट्ठा होना, assembly of the Congress committee in the village, Rangegowda equates Moorthy with Gandhi, and everybody present laughs. Rangegowda एडमोनिशेस देम, उनको स्कोल्ड करता है. वो जब वो हंसने लग जाते हैं ना, तो वो उनको स्कोल्ड करता है. रंगेगौड़ा उनको स्कोल्ड करता है लोगों को और बोलता है, देर इज़ नथिंग टू लाफ एट ब्रदर्स, ही इज़ अवर गांधी. द स्टेट ऑफ मैसूर हैज़ महाराजा, बट दैट महाराजा हैज़ अनदर महाराजा हु इज़ इन लंडन, and that one has another one in heaven, and so everybody has his own Mahatma. And this Moorthy, who is now grown up and great, and he has wisdom in him, and he will be our Mahatma. And they all said, so he is. तो वो इतनी तारीफ करता है उसकी, बोलता है कि ये महात्मा ही है. This is as good an interpretation of Moorthy's status in his own village community as there could possibly be. मतलब इस तरह का स्टेटस है, इस तरह का इंटरप्रिटेशन है मूर्ति के स्टेटस की. ओके, नाउ इन द अल्टीमेट एनालिसिस, अगर हम अल्टीमेटली एनालाइज करें मूर्ति के करेक्टर को, मूर्ति प्रूव्स टू बी अ वीक गांधीयन व्हेन हिज नेशनलिज्म इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जवाहरलाल नेहरू सोशलिज्म. But he is a genuine son of the soil who retains his simplicity and sincerity even after all the experience that he goes through. The state of his mind may be compared to that of the common Indian before freedom. The happenings in Kanthapura are centered around the personality of Moorthy, and his mental growth parallels the transformation of Kanthapura from a sleepy village to a हॉटबेड ऑफ एक्टिव सत्याग्रह. जैसे जैसे टाइम बीता रहता है ना, मूर्ति के भी करेक्टर में चेंज आते रहते हैं और कांतापुरा भी चेंज होता रहता है. फॉलोइंग द बेसिक गांधीयन आइडियोलॉजी, मूर्ति अवॉइड्स द डायरेक्ट confrontation with non-belief and criticism. Moorthy tried to preach the Gandhian percept of universal love, which ought to
include one's enemies too. मतलब यूनिवर्सल लव है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मन है कोई दोस्त है, सबके लिए यूनिवर्सल लव है. But Rangegowda, the strong man of Kantapura, rejects the Gandhian ethic of love. According to him, is meant only for the superior human beings, not for the common people. तो रंगेगौड़ा बोलता है कि ये कॉमन लोगों के लिए नहीं है, ये जो गांधीयन जो भी एथिक्स ऑफ लव है ये बड़े बड़े लोगों के लिए है. मूर्थी मेक्स नो अटेम्प्ट टू काउंटर रंगेगौड़ा's क्रिटिसिज्म. कुछ नहीं बोलता मूर्थी, बट एट द सेम टाइम एक्सेप्ट्स हिज हेल्प इन स्पाइट ऑफ हिज लैक ऑफ फेथ इन गांधी. बट हालांकि वो जो रंगेगौड़ा है वो गांधी जी में विश्वास नहीं रखता इतना, बट मूर्थी जो है ना उसकी हेल्प लेता रहता है. मतलब वो किसी चीज़ के लिए रिटेलिएट या किसी चीज़ के लिए बहस करना वैसा कुछ नहीं करता है. मूर्थी शांत टाइप का इंसान है. ओके, वन माइट एज वेल इन कंक्लूड विद ईशा दे. जैसे कि वन माइट मतलब कोई भी रीडर जो है वो ईशा दे की इस बात से सहमत होगा कि क्या बोलती है ईशा दे. इन द फाइनल क्रिटिसिज्म ऑफ गांधी एंड हिज पैक्ट विद इरविन which necessitates the withdrawal of the agitation that wipes out Kantapura, Moorthy's bitterness echoes the frustration actually felt by a whole generation of Indians. तो जो इरविन समझौता हुआ था उसकी वजह से जो भी कांतापुरा में हुआ, वहाँ आगजनी हुई, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो जो कुछ हुआ, मूर्ति बहुत ही बीटर हो गया था. ये सिर्फ मूर्ति ही बीटर नहीं हुआ था, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया बीटर हो गया था, ये बात की जा रही है. नाउ मूर्ति एडमिट्स टू एज मच इन द लेटर दैट ही राइट्स टू रत्ना फ्रॉम प्रिजन. तो जब मूर्ति प्रिजन में होता है ना तो वो रत्ना को एक लेटर लिखता है और बोलता है, मतलब ये सब चीज़ें बोलता है कि वो कितना बीटर हो गया, कितना उसको बुरा लगा है इन सब चीज़ों से. जस्ट वेट. सो हाँ, Kantapura is one of the best Gandhi novels in English. Its hero, Moorthy, represents in theory and practice the Gandhian principles of ahimsa and satyagraha. Accordingly, he is somewhat an idealized character. Idealized character है वो. So हमने पहले भी एक नाम लिया है S.C. Herrex का. तो वो बोलते हैं Moorthy is a young Brahmin and former student and is independent minded with respect to marriage. He becomes leader of the village Congress committee and is excommunicated from the Brahmin Brotherhood. मतलब उसको निकाल दिया जाता है for putting in practice Gandhi's untouchable policies. मूर्ति निकाल तो नहीं दिया जाता, लेकिन अच्छा नहीं समझते लोग, है ना. जब वो अनटचेबल लोगों के साथ मिलता है तो लोग अच्छा नहीं समझते, उसकी ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग अच्छा नहीं समझते हैं. Moorthy befriends the local pariah, mixes with them and works for their educational advances. He treats them as equal in the political struggles and fights for their social and economic right as human beings. The effect of the effect of his orthodox mother, of his excommunication, she dies of shame and guilt, is indicative of the moral intensity with which Hindu communal modes are felt and practiced by its orthodox members. ये कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था ना उस टाइम पे, तो ये बताया गया है. With reference to Moorthy's speech on ahimsa and satyagraha that he makes to the villagers after Mahatma Gandhi's arrest, Herrex का नाम फिर से आ गया, वो लिखते हैं, if Kantapura has a message, it is this. And in Moorthy's speech, Raja Rao captures the profound spirit, the gentle firmness, and the oratory of the heart in plain speech and homely understanding, which Gandhi's public person represented. Sorry. Chalo, thank you so much. Please subscribe my channel. Next video में we are going to do the women in Kantapura. Thank you.